So students, today's video is on determination of income and employment. There are two theories. One is given by the classical economist and the other is modern economics, is given by Keynes. During the depression of 1930s, this theory came into light, and this is regarding classical economists say and all they say supply creates its own demand. According to it, if you produce something, it will automatically be sold without much difficulty. But during the depression, this classical theory had no answer to the unsold stocks and unemployment and all such problems. Then the Keynesian economics, which is also called modern economics, it said that demand, it's not the supply, but it is the demand which creates its own supply. So demand will come only if the people will have a purchasing power. If they ask for something and producers know that if they produce this thing it will be sold, then they will go into production. But if they go into production according to the classical economy without any demand for that, then there will be unsold stocks, and if there are unsold stocks, production can't be carried out. तो जैसे है कि अगर मांग का होना सुनिश्चित होना चाहिए, मांग में परचेजिंग पावर भी आएगी और ये भी आएगा कि उनको ज़रूरत भी है और उनके पास उसको ख़रीदने की कैपेसिटी भी है. अगर वो चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है तो प्रोडक्शन होगी, अपने आप होगी, एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे. अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो प्रोड्यूसर्स विल शाई अवे फ्रॉम producing anything. So Keynesian theory is basically a theory of demand, and in the determination of income and employment there are two components to be studied. As in scissors there are two blades, in theory of income and employment determination there are two things, aggregate demand and aggregate supply. According to Keynes, this Keynesian theory, modern economics, it is based on two assumptions. First, we study short run, short period, and second is perfect competition, open market, private sector market. So he says, why study long run? Because in long run we are all dead, and perfect competition means there is competition among the buyers, among the sellers, and in every production unit. Then this theory holds good. But because we study short run, in short run supply is given, it can't be changed, though the elasticity of supply is infinite.
We'll come to this part later on. Now I explain the components of aggregate demand. So aggregate demand has three or four components: private consumption, then investment, private investment, then government purchase, and then net exports. And similarly, this is theory of income and employment determination. Aggregate demand and aggregate supply. So aggregate demand, private consumption by households, and investment, private investment, then government purchase, and then net exports. In this supply, so the definition of aggregate demand is whatever goods and services are planned by all the consumers in the economy or producers in the economy during a planned, it is not the actual things demanded. These are the planned demand of all the consumers and producers in the economy in given period, and this depends on all these are the components. Similarly, the definition of aggregate supply is planned production of what the producers plan to produce in form of goods and services during any given period. And because this is from producer's angle, this is the cost of production, but from the angle of the factor owners, जिन्होंने वो फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोवाइड करनी है, दोज आर द फैक्टर ओनर्स. जब वो प्रोडक्शन होगी, साइमल्टेनियसली जब प्रोडक्शन होती है तो उसके साथ साथ इनकम जनरेशन होगी. तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कॉस्ट होएगी, और जो फैक्टर ओनर्स हैं उनके लिए ये होगी फैक्टर इनकम. तो जो नेशनल इनकम है उसकी डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. तो क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हुआ, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इज इक्वल टू योर इनकम. तो जो इसकी इनकम की जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, वो इनकम की इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिट जाएगी 45 डिग्री के लाइन इसके ऊपर एट एनी गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस. यही हम कहेंगे कि शॉर्ट रन में प्राइसेस बढ़ती नहीं हैं, वो मोर और लेस सेम ही रहेंगी. तो इसके साथ जो लेवल ऑफ प्राइसेस है, गिवन द लेवल ऑफ employment, if we have the resources, more of the resources can be employed, income can go on increasing. वो किसी भी लेवल पे जा सकती है, तो वो इन्फिनिट होगी डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है किस लेवल पे आता है. अगर वो पहले आ जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्शन होएगी, अगर वो बाद में आता है तो प्रोडक्शन कैन गो टिल दिस पॉइंट. अगर हमारे पास रिसोर्सेज और भी अवेलेबल हैं तो इट कैन गो ऑन. तो इसके लिए ये जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को हम इनकम भी कहते हैं. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन डिटर्मिनेशन ऑफ income and employment, this is a part of macroeconomics. There are two approaches. One is classical theory approach or theory, and the other is Keynesian or modern theory.
classical theory is based on Say's law of markets. It says that supply creates its own demand, and secondly, it functions at full employment level automatically. It functions at full employment level, and government need not interfere. It works automatically. Laissez-faire policy. But when the Great Depression set in 1930s, this classical theory had no answer, no solution for the existing problem. Then the new theory came into being for explaining the prevalent situation. Then Keynes says, no doubt, equilibrium is there where aggregate demand is equal to aggregate supply. But contrary to the classical belief, it may or it may not be at the full employment level. जो क्लासिकल थ्योरी है, ये परंपरागत सिद्धांत है, उसने कहा कि हमेशा ही एक एज अ रूल फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी और वो ऑटोमेटिकली वो स्वतः ही बनती रहेगी, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं थी और वो इनकम नहीं हो रही थी, तो उस टाइम हम कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या है। तो जो केन्स ने जो सॉल्यूशन दिया, उन्होंने जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उन्होंने क्या कि ऑपोजिट टू द सप्लाई क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड, इट इज़ द डिमांड दैट क्रिएट्स सप्लाई, इट्स नॉट द सप्लाई दैट क्रिएट्स डिमांड, बट इट्स द डिमांड दैट क्रिएट्स सप्लाई। एंड इन्होंने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है एज अ रूल चलेगी। वो कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे बने, इट कैन बी एनीवेयर। एग्रीगेट सप्लाई कैन बी मोर देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कैन बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेस देन एग्रीगेट डिमांड भी हो, जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होगा। तो इसमें है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है। अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। अगर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से बढ़ जाएगी तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और जो अगर डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर्स क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये है, इसके साथ ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब हमारे सिलेबस में क्लास 2 में एग्रीगेट जो डिमांड है वो केन्जियन थ्योरी ही है, तो हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।